press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey friends, this is Ashok A.Riwal. I welcome you all in today's class. Friends, today we are going to discuss all the important word meanings of the chapter The Fun They Had. Yes, my dear friends, The Fun They Had by Isaac Asimov. The first chapter of your class 9th from the book Beehive. Right? So before starting the summary, before starting the explanation of the chapter, we must know the word meanings of the chapter so that we can understand it better. And now it has become more important because we shall be judged by MCQ based questions. So we must know each and every word and their meanings. So let's start with the chapter. And before that, we can have the message of the chapter. It says, the author wants to convey the message that human interaction has its own importance and technology cannot replace old world charm. If I tell you the little bit summary of the chapter, so we know very well that the summary tells about the technology. It takes us to the future generation. It takes us about the, I must say, 17 May 2157, यानी कि 2157, राइट. सो वहाँ पर हमें लेकर जाता है. सो समरी हम बाद में डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो में. आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ वर्ड मीनिंग्स की जो बहुत ज़रूरी हैं, राइट. तो फर्स्ट वर्ड दैट इज़ हेडेड. सी फ्रेंड्स, वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद, इनको लर्न करने के बाद आपके लिए चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाता है. सो दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज टू मेक द वर्ड मीनिंग्स क्लियर ऑफ द चैप्टर. The first word is headed. So headed means marked on the top of the page. Because अगर हम बात करें headed, उसके heading पे क्या लिखा हुआ था. So that means mark on the top of the page. Real means actual. Tommy found a real book. Means actual book. Printed, made marks on the paper. Means वो printed थी, marks बने हुए थे. Because 2157 की अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो वहाँ पे इस तरह की जो प्रिंटेड बुक्स आज हमारे सामने है, जो पेज आपके सामने है, ऐसे प्रिंटेड बुक्स नहीं थी. वहाँ पे लाइव जो चीज़ें थी, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड्स थे वो चलते थे, तो उन बच्चों के पास ऐसी बुक्स नहीं थी, राइट. सो नेक्स्ट वन इज़ क्रिंकली. क्रिंकली विद मैनी फोल्ड्स ऑन लाइन्स, यानी कि जो बुक्स काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, पेजेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, दैट वी कॉल क्रिंकली. हियर दीज वर्ड्स आर अबाउट अ बुक. टॉमी फाउंड अ रियल बुक. एक रियल बुक टॉमी को मिली थी, उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की थी, ठीक है. नेक्स्ट वन इज ऑफुली. ऑफुली मीन्स वेरी वेरी बैड, यू मे से इन दैट, बट हियर द वेरी. फनी. फनी मीन्स, ऑफुली फनी मीन्स कॉजिंग अम्यूजमेंट. अम्यूजमेंट मीन्स अगेन दैट इज फनी. स्टिल. स्टिल मीन्स होता है मोशनलेस. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वर्ड्स. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज motionless. Instead of means in place of. Supposed, thought, screen, often movable, upright. जो स्क्रीन थी जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑफन मूवेबल, अपराइट और फ्रेमवर्क. गी. गी इज़ अ एक्सप्रेशन, अ माइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज. सो गी इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ यूज्ड इन द चैप्टर टू एक्सप्रेस द सरप्राइज. What a waste. What a waste means what a rubbish. Here that Margie says about the book that what is waste. What a waste. क्या rubbish book है ये, क्या दिया गया है इसमें, right? So that is rubbish means useless, बकवास. Are through with. Are through means have read thoroughly, means they have read the book thoroughly. Guess means think. A million, 10 lakhs, quite easy. Plenty, sufficiently. Plenty होते हैं enough, बहुत ज़्यादा मात्रा में. Abundant, प्रचुर. Right? So here that is sufficiently. Telebooks. Books. Telebooks, as I told, books printed on the screen of the television. Television की screen पर जो words printed थे, that is known as the telebook. Right? Like we call email. So email means electronic mail. E-paper. Right? So that is electronic paper. So that is telebooks जो उसकी screen पे जो चल रहे थे, they are. I hope you are getting it. The next one. Attic. Tommy found that book in attic. Attic क्या होता है फ्रेंड्स? रूम विद इन द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसको हम दुछत्ती बोलते हैं अपने यहाँ पे लोकल में. यानी कि आपके एक रूम के एक स्टोर रूम टाइप हम बना देते हैं, एक मेन रूफ और काइंड ऑफ स्मॉल रूम के बीच में एक स्पेस छोड़ देते हैं, दैट वी कॉल एटिक. ATTIC.
Next one is scornful. SCORNFUL. Scornful means hateful. Contemptuous means hatred. जैसे आप नफरत करते हो, that is known as scornful. 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 Next one is mechanical. So mechanical teacher, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल टीचर किसके लिए यूज़ हुआ है. मैकेनिकल टीचर यूज़ हुआ है कंप्यूटर के लिए. सो द वर्ड इज़ यूज मैकेनिकल टीचर फॉर कंप्यूटर. Sorrowfully, with sorrow, we know very well. Sorrowfully means with sorrow. Apart, aside, एक तरफ. Ugly, dirty, unpleasant in appearance, जो दिखने में भद्दा हो, not very attractive, not very beautiful. Next one is slot. Slot means here long narrow opening. A place, slot एक particular place होता है. So that means the long narrow opening here. That word is used. Calculated the marks. Calculated the marks, quite easy, means evaluated. मार्क्स की evaluation की. एक्चुअली मैं बता देता हूँ. मार्गी जिसके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे बिकॉज हर वन सेक्टर ऑफ टेली बुक्स वो गियर्ड अप हो गया था, आगे बढ़ गया था, इसलिए उसके मार्क्स कम आ रहे थे. तो दैट इज़ पैटेड स्ट्रोक. पैटेड PATTD. पैटेड होता है थपथपाना, स्ट्रोक. हु डिड दिस? जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, जो मैकेनिकल टीचर को कंप्यूटर को ठीक करने के लिए उनके घर पे आया था, ही पैटेड ऑन मार्गी हेड. दैट इज स्ट्रोक. पैटेड थपथपाना. फॉल्ट. फॉल्ट मीन्स मिस्टेक. ही सेड दैट दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ दिस गर्ल, सो दैट इज फॉल्ट. द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वर्ड sector. Sector here means portion. History sector, geography sector, so it means that portion. Geared to, as I told, geared up जो होता है adjusted to a particular level, एक level आगे बढ़ जाना. So overall the whole pattern sequence, pattern means sequence, quite easy. Disappointed, hopeless, sad. Disappointed means hopeless, sad. Altogether means completely. Altogether एक होता है all together. This is altogether. Altogether, that's a different word. Altogether means सारे के सारे. Altogether means completely. Blanked out. Blanked out means appeared blank or empty or loss of memory. Blanked out जैसे window corrupt हो जाती है, that we call blanked out. So here apparently blank. Next one is superior. Superior means greater in power. And loftily, LOFTILY. Loftily means in a superior way. आई एम श्योर दैट ये वर्ड्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे. एक बार आपने ये वर्ड्स, ये वीडियो देख ली है तो नेक्स्ट जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बिकॉज देयर वॉन्ट बी एनी वर्ड जो आपको प्रॉब्लम करेगा. ये सारे के सारे मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं दे हैव बीन टेकन फ्रॉम योर बुक. नेक्स्ट वन इज सेंचुरीज. सेंचुरीज यू नो वेरी वेल दैट मैनी 100 years. जैसे डिकेड होता है वन quantity of 10 years, like centuries, many 100 years. Ago, in the past time. Smart, having a quick intelligence, smart. Enough, as much as necessary, enough. Sure, assured. Almost. Almost means very nearly. Almost means complete. I betcha. Betcha means I'm sure, I can bet. I'm sure. I betcha means here, I'm sure, I can bet. Dispute, disagree, झगड़ा, that we call. Dispute means disagree. Here strange. Strange means not previously seen, means that is a very strange, जिसको पहले कभी नहीं देखा गया हो, that is known as strange. So here it says adjusted, arranged, yet still, probably, perhaps, nonchalantly. Nonchalantly means carelessly, not showing much interest. Dusty, spoiled with dust, खराब होना. Tugged, tug your shirt. So tugged means pushed, धक्का देना. Except, other than, not including. All were present except Rohan. So other than, not including. Flashing, emit light suddenly. Flash means एकदम से light emit होना. Insert. Insert means place. With a sigh, sadly. With a sigh, sadly, and fun, amusement. So these are the total words of the chapter number 1, the fun they had. I'm sure that this is going to be very helpful for you, and let's meet in the next class with the next chapter's word meanings. Till then, bye bye, stay happy, stay healthy, have a nice day.